Good afternoon, student. I think you will be fit and fine at your home. And the revision work has been completed. Last two chapter. The first chapter is the invention of Vita Wong, and the second chapter, Fire, Friend, and Foe. All the question answer has been completed, and now we are going toward the UT second essay two. And for essay 2 there are two chapters, there are four chapters totally that is very important. So the first chapter is a bicycle in good repair, a bicycle in a good repair. This is the chapter, and the first step reading. So I read this chapter and you read with me step by step. Okay, let's start. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in a good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. What happens if the machine has a will of its own and the mechanic know next to nothing? A bicycle in a good repair. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following Sunday, and I agreed. I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day. He said, "That's a good looking machine of yours. How does it run?" "Oh, like most of them," I answered, "easily enough in the morning, goes a little stiffy after lunch." He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. I said, "Don't do that. You will hurt it." I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. Besides, if it is wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt much as I should had we started racking my dog. Whacking means होता है किसी को पीटना, beating. When I explain this chapter that I told you, okay? He said, racking my dogs. He said, "This front wheel wobbles." I said, "It doesn't if you don't wobble it." It did not wobble. As a matter of fact, nothing worth calling a wobble. He said, "This is dangerous. Have you got a hammer?" I ought to have been firm. What I thought that perhaps he really did know something about the business. I went to the tool shed to see what I could find. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. He was playing with it, twiddling. Twiddling means होता है टर्निंग, घुमाना, घुमा रहा था. It round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. He said, "It looks to me as if the wiring were all wrong." I said, "Don't you trouble about it any more. You will make yourself tired. Let us put it back and get off."
He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. He talked as though it had dropped out by accident. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little walls. Catch him, he shouted. Catch him? We must not lose any of them. He was quite excited about them. He growled round for hour and hour and found 16. He said he hoped we had caught them all, because if not, it would make a serious difference to the machine. I put them for safely in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once begin taking off the gear case. I did try to dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. He said, people talk like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. I had to confess he was right. In less than 5 minutes, he had the gear case in two pieces, lying on the path, and was growling for screw. He said it was always a mystery to him the way Screw disappeared. Common sense continued to whisper to me, stop him before he does any more mischief. You have a right to protect your own property from the rabbits of lunatic. Take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. What I am weak when it comes to hurting other people's feelings, and I let him muddle on. He gave up looking for the rest of the screw. He said, screw has a knack of turning up when you least expected them, and then now he would see the chain. He tightened it till it would not move. Next, he loosed it until it was twist or loose it was before. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel, and we changed places. At length, we did get the thing into position, and the moment it was in position, he burst out laughing. I said, what's the joke? He said, well, I am S. It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what had led him to this discovery. He said, we have forgotten the balls. I looked for my hat. It was lying topsy turvy in the middle of the path. Topsy turvy means ऊपर नीचे. He was of a cheerful disposition. He said, well,
We must put back all we can find and trust to providence. We found 11. We fixed 6 on one side and 5 on other. And half an hour later the wheel was in its place again. It needed hardly be added that it really did wobbles now. A child might have noticed it. He said it would do for the present. I said, watching you to do this is of real use to me. It's not only your skill that fascinates me, it's your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. Thus encouraged, he set to work to refix the gearbox. He stood the bicycle against the house and worked from the offside. Then he stopped it against a tree and worked from the one side. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheel and worked at it from below and dropped oil upon himself. Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over to his head. Then he lost his temper and tried wheeling the thing. The bicycle, I was glad to see, showed spirit, and the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. One moment the bicycle would be on gravel path and he on top of it. The next the position would be reversed. He on the gravel path, the bicycle on him. Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs. What his jump would be short lived. By a sudden, quick movement, it would be free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of its handles. At a quarter to one, dirty and disabled, cut and bleeding, he said, I think that will do, and rose and wiped his brow. The bicycle looked as if it is also had enough on it, which had received most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen where, so far as possible, he cleaned himself. Then I sent him home. Jerome is the poet, sorry, is the writer of this story, and now we explain the story. Okay. If you wish to go on a long bicycle ride, यदि आपकी इच्छा होती है जाने की एक लंबी बाइसिकल राइड घूमने की, तब बाइसिकल शुड बी इन अ गुड कंडीशन, आपकी बाइसिकल अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इफ पॉसिबल, अगर आपको संभव हो सके, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहाल इट, कि कोई भी अगर आपकी मशीन खराब है, आपकी साइकिल खराब है, तो उसे वो मैकेनिक देखे जो कि एक एक्सपर्ट मैकेनिक हो, जिससे आपकी मशीन पे कोई नुकसान ना हो। what happen, लेकिन क्या होगा, इफ द मशीन हैज इट विल इट ओन द मैकेनिक नो नथिंग टू, लेकिन तब क्या होगा जब आपकी मशीन को उस मैकेनिक ने सही करा जिसे कुछ भी नहीं आता हो, तो क्या होगा।
and all this thing you will read in this chapter. Okay, so let's start. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following Sunday. मेरा दोस्त आथर हैं इसमें, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसमें लेखक बताते हैं कि फॉलोइंग संडे को मैंने और अपने मेरे दोस्त ने प्लान बनाया बाइसिकल से घूमने का। एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत भी हो गया। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफोर्ट। मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था, फिर भी आई गॉट अर्ली, जल्दी उठा। आई मेड एन एफोर्ट एंड वाई प्लीज्ड विद माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत खुश था कि हम बाइसिकल राइड पे जा रहे हैं। ही केम हाफ एन आवर लेट, लेकिन वो आधा घंटा लेट आया। आई वाई वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसका गार्डन में इंतजार कर रहा था। इट वाई लवली डे, बहुत सुंदर अच्छा दिन था। ही सेड, उसने कहा, दैट इज अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ यू, हाउ डज इट रन। दैट इज अ गुड मशीन ऑफ यू, उसने कहा जब वो आया तो उसने कहा ये आपकी बहुत अच्छी मशीन है, साइकिल है। हाउ डज इट रन, ये कैसे दौड़ती है। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, जैसे और दौड़ती हैं वैसी दौड़ती है। आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया कि जैसे और साइकिल चलती है वैसे ये मेरी साइकिल चलती है, कोई स्पेशल नथिंग स्पेशल इन इट। ईजली एनफ इन द मॉर्निंग, गोज ए लिटिल स्टफी आफ्टर लंच, थोड़ा मैं मॉर्निंग में चलाता हूँ, बाकी ये लंच करने के बाद। ही कॉट होल्ड ऑफ इट, उसने इसे पकड़ा। वाई द फ्रंट व्हील, उसके आगे वाले पहियों को। एंड द फॉग, और तीलियों को हिलाया। एंड सॉकेट वायलेंटली, और एक तरीके से तेजी से गुस्से में हिलाया। आई सेड, मैंने कहा, डोंट डू, ये मत करो, यह मत करो, यू विल हर्ट इट, तुम इसे कोई नुकसान पहुंचा दोगे। आई डिडेंट सी वाई ही शुड सेक इट, मैं नहीं जानता, मैं नहीं देख पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हिला रहा है इसे। मुझे ये कुछ पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, उसने कुछ नहीं करा उसके संग। बिसाइड, इसके अलावा, इफ इट वांटेड, शेकिंग, हिलाता रहा। मेरी बात को उसने नज़रअंदाज कर दिया, वो हिलाता रहा। आई वाई द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, मैं सही व्यक्ति हूँ, मैं हिलाने दो मुझे, मुझे नॉलेज है इसके बारे में। लेकिन एक्चुअल में ही हैज़ ए लैक्स ऑफ नॉलेज, इसके अंदर कोई भी नॉलेज नहीं थी इस एक्सपीरियंस की साइकिल के बारे में। आई फेल्ट मच आई शुड हैड टू स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, आई फेल्ट आई शुड स्टार्टिंग रैकिंग माई डॉग, ही सेट दिस फ्रंट व्हील बबल, उसने कहा कि भाई मेरा जो फ्रंट व्हील है वो बबल माने हिल रहा है, गड़बड़ है इसमें, प्रॉब्लम है। देयर आर फ्यू प्रॉब्लम इन माई फ्रंट व्हील। आई सेड, मैंने कहा, इट डजेंट इफ यू डोंट बबल इट, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसे मत हिलाओ ज़्यादा। इट डिडेंट बबल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और थोड़ा बहुत तो पहिया हिलता ही है। नथिंग वॉज कॉलिंग बबल, ये इसमें हिलने की कोई बात नहीं है। ही सेड, उसने कहा, दिस इज डेंजरस, यह बहुत खतरनाक है। हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास हैमर मीन हथौड़ा है। आई आउट टू हैव बीन फिल्म, वट आई थाउट द परहैप ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट दिस बिजनेस, मेरा मन नहीं हुआ, फिर भी मैं वहाँ से हथौड़ा लेने चल दिया। लेकिन मुझे ये मतलब ये सोच के गया कि जब ये इतना इंसिस्ट कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी साइकिल की। इसलिए वो लेखक जो राइटर था वो हथौड़ा हैमर लेने चला गया। आई वेंट टू द टूल साइड, मैं टूल साइड पे गया। टू शी, देखने, व्हाट एम आई फाइंड, कि मैं क्या हथौड़ा पा सकता हूँ। व्हेन आई केम बैक, जब मैं लौटा, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पे बैठा था। विद द फ्रंट व्हील बिटवीन ही लेग, और आगे वाला पहिया उसके पैरों के बीच में था। एज माई स्टूडेंट लुकिंग इन द डिस्प्ले, ओके, पेपर। ई मीन्स ये है यहाँ पे इसका जो मेन ये कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, कि अगर आपके अंदर कोई मतलब कोई काम टैलेंट नहीं है आपके अंदर, तो आपको उस बात में नहीं घुसना चाहिए। जैसे डॉक्टर है, अगर कोई पेशेंट है, मरीज बीमार है, तो आप बीच में नहीं कूदें। अगर आपको डॉक्टर नहीं आती है, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही देखेगा। यही इस चैप्टर में कहा गया है। जो राइटर है उसकी साइकिल उसके फ्रेंड ने देखो कैसे तोड़ दी, इधर उधर फेंक दी। माय डियर स्टूडेंट, यही द मे दैट राइटर मतलब जो बाद में मैसेज देता है कि किसी को ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए जिससे मतलब किसी को उसमें एक्सपर्ट नहीं हो।
आई वेंट टू द टूल शेड टू सी व्हाट एम कुड फाइंड। मैं गया टूल शेड और देखा कि हैमर कहाँ है। व्हेन आई केम बैक टू, ये हो गया तब, ग्राउंड फ्रंट व्हील बिग हिल लैग, उसकी जब मैं लौटा तो देखा मैंने उसके दोनों पैरों के बीच में आगे वाला पहिया था। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वह इससे खेल रहा था। ट्विडलिंग, हिला रहा था, घुमा रहा था। इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर, अपनी उंगलियों के बीच में, उंगलियों की सहायता से इसे घुमा रहा था। द रेमिनेंट ऑफ द मशीन, रेमिनेंट मीन्स होता बाकी पार्ट जो थे ऑफ मशीन के बाद, लाइंग ऑन ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, उसके पीछे पड़े हुए थे, मतलब साइकिल के पीस पीस कर दिए, टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए साइकिल के। ही सेड, उसने कहा, इट लुक्स मी एज इफ द वेयरिंग वर ऑल रॉन्ग, लगता है कुछ कमी है इसके वेयरिंग में। आई सैड, मैंने कहा, डोंट यू टू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, अब मुझे ज़्यादा परेशानी आप मत दें, कोई परेशानी नहीं दें। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तुम थक जाओ, तुम मतलब तुम थक जाओगे ये करने में। लेट अस पुट इट बैक टू गेट ऑफ, यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी मशीन देख रहा हूँ, डोंट वरी, उसने कहा आथर से। ही सैड, उसने कहा, बी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर विद इट, हम, वह उसने कहा, बी मे सी, मैं देखूंगा कि क्या मामला है, ये चल क्यों नहीं रही है, डाउट इज आउट, ये कैसे हो गई है, ये स्मूथली चल क्यों नहीं रही है। ही टॉक्ड एज थाउ इट हैड ड्रॉप आउट द एक्सीडेंट, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रू समथिंग समवेयर, उससे पहले मैं उसे कह पाता कुछ, उसने कुछ स्क्रू को अनस्क्रू के थ्रू और खोल दिया कोई। एंड रोल्ड अप ऑल ओवर द पास सम डजन सो लिटिल बॉल, छोटी छोटी बॉलें आपने देखी होंगी, तीलियों के बीच में होती है साइकिल में, वो बिखर गई, कई वहाँ पे बिखर गई बॉल। कैच हिम ही शाउटेड, वो चिल्लाया, पकड़ो इसे पकड़ो, कैच हिम, वी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ देम, हम इन्हें कोई, हमें मतलब खो नहीं दे इनमें से कोई बॉल। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट, वह भी चिल्ला रहा था, वह भी काफ़ी इस चीज़ के बारे में एक्साइटेड था। ही ग्रोल्ड राउंड फॉर आवर एंड आवर एंड फाउंड 16, उसने देखा, बीनना शुरू करा, लेकिन हम, कह रहा है कि मैं मुश्किल से ही 16 बॉल को कर पाया, मतलब इकट्ठी कर पाया। ही सैड ही होप वी हैड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ नॉट इट मेक अ सीरियस डिफरेंस टू मशीन, उसने कहा इनका बहुत अहम रोल होता है इसमें, अगर बहुत ही सीरियस रोल होता है इनका मशीन में, अगर ये नहीं होंगी तो मशीन नहीं चलेगी। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, लेकिन ने कहा कि मैंने सेफ्टी के लिए अपनी हेड, मतलब उसमें रख लिया, हेड टू कैप पे। इट वाई नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, ये एक सेंसिबल थिंग नहीं थी, आई एडमिट, जो मैंने माना। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन completed, रीडिंग also completed, and my dear student, now you write the word meaning of this chapter. Okay, so all the word meaning in your notebook, your notebook. Okay, suppose that there is word meaning whacking, hacking means होता है बीटिंग, किसी को पीटना। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग। वॉवल्स, मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड, एक वॉवल्स माने हिलना होता है, मूव करना होता है अनस्टेडली, साइड टू साइड, कोने कोने से। नेक्स्ट ट्विडलिंग, ट्विडलिंग मीन्स होता है घूमना, टर्निंग। नेक्स्ट है रिमेनियंट, रिमेनियंट मीन्स होता है बचे बचे हुए पार्ट, रिमेनिंग पार्ट आया था जो बाकी बचे हुए पार्ट उसके पीछे रखे हुए थे। एंड वियरिंग, वियरिंग माने वॉल वियरिंग, जो वॉल होते हैं, वॉल होता है मशीन में, उसे वॉल वियरिंग। दिस इज ग्रोवेल्ड, ग्रोवेल्ड मीन्स होता है क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, रेंगना एक तरीके से ग्राउंड पे। सी टू द चैन, चेक और एग्जामिन, चैन को चेक करना, एग्जामिन करना। एंड रेवेज, रेवेज, रेवेज मीन्स होता है डैमेज, नुकसान। ल्यूनेटिक मीन्स होता है मैड पर्सन, पागल, आर यू ल्यूनेटिक, मतलब कह सकते हैं सेंटेंस में पागल, मैड। एंड मडल्स, मिक्स अप विद, मिक्स अप माने मिलाना, मडल्स करना। टॉपसी टर्वी मीन्स होता अपसाइड डाउन साइड, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी मीन्स अपसाइड डाउन साइड। ओके,
इनएक्सपेक्टेबल मन होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन नहीं कराया जाए। ऑफ एंड साइड हो गया, डेंजरस इनटू पर रिड्यूस कम होना। और यू विल राइट ऑल द वर्ड मीनिंग, ओके, एंड नेक्स्ट आई एक्सप्लेन टुमारो।